if the writing is solid enough and a director is aware that his scene has to go from point A to point B and no more or no less, in an ensemble, एक्टर बहुत समझदार होते हैं, whimsical होते हैं, लेकिन बहुत समझ पहले दिन समझ जाते हैं कि भाई डायरेक्टर को जो शॉट चाहिए वो चाहिए, या वो आप बताइए क्या करना है वाला डायरेक्टर हो सकता है. Goons and Gaalis, ऐसे like the 3 Gs. ये राजन डी की ये टाइटल ना ले ले तुमसे कुछ, उनका है ना गन्स और गुलाब, दे माइट चेंज, इधर भी ढिशके उधर भी ढिशके उधर भी ढिशके, सब सबसे बना के रखो. गोपाल का कैरेक्टर वही था कि सबसे बना के रखो. It is the future of cinema according to me. In Indian cinema, in Hindi film cinema, I think we need to all come together and work more often. When Dharamji said कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, literally I don't think he had an idea कि Vishal Bhardwaj and Aasmaan are actually going to make 2 banger of the films out of it. And this time we are gonna discuss about कुत्ते कमीने के बारे में बाद में बात करेंगे. नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा के बारे में बात करते हैं. वो I definitely want to be part of मैं तेरा खून पी जाऊंगा. So guys, welcome Arjun Kapoor, Radhika Madan and Aasmaan Bhardwaj to peepingmoon.com, and Arjun is starting कि मैं तेरा खून पी जाऊँ. क्योंकि विशाल जी को तो 7 गुण माफ है ना, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम कोशिश तो करें. हेडलाइन आ गई है, बाकी अपना अपना सब समझ लो, हम देख लेंगे. But guys, Aasmaan, starting with you. Too much of burden on the shoulders, is it to carry forward Vishal sir's legacy? तो एक्चुअली मुझे पापा ने भी ये सिखाया कि आप अच्छी फिल्म बनाओ. एज अ फिल्म मेकर यू हैव टू फोकस ऑन मेकिंग अ गुड फिल्म. बाकी फिर जो लेगेसी का ये सब है, ये बाहर की चीज़ें हैं. मैं नहीं बोल सकता कि अरे देखो मैंने लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर दी. बाहर से कोई देखेगा बोलेगा अरे इसने लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर दी या नहीं करी. तो वो मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं उसको कंट्रोल कर सकता. तो आई एम नॉट burdened by it. I'm more burdened by, am I doing good work? Am I going to be making is this a good film? Have I done my best? Have I been honest to what I wanted to do? And that's what I want to carry forward for the future, whatever, how many ever films I make. So, yeah. Arjun, जब last time you played Cop in Sandeep and Pinky Farrar, तब वो एक मस्त लेवल वाला ग्रे था, एकदम मज़ेदार. मेरे लिए तो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था. ये वाला मतलब ऐसे रेंज ऑफ कुत्ता कमीनापंती में कहाँ हम इसको भी ऐसे रेंज दूंगी मैं. I'll tell you what, when you play negative or in the mainstream sense, आप अगर villain play करते हो या anti hero play करते हो तो उसमें एक starkness होती है. मुझे लगता है this is perhaps arguably the darkest role that I have played, in the sense because it's a very believable character. It's a very real situation that is created by his own doing, and his reactions are perhaps the most extreme that a person that I can imagine taking. In the sense, जब आपको पता लगता है आपके बगल में रहने वाला इंसान ऐसा निकल सकता है. ये आपके गली मोहल्ले में रहने वाला गोपाल हो सकता है अपनी फैमिली के साथ, बट अपने आप को बचाने के लिए जो हदें पार करता है और जो डिसीजन लेता है, जो चॉइसेस लेता है, अंत तक, आखिरी सांस तक, मतलब इन द सेंस टिल द लास्ट बीट ऑफ द फिल्म, he is relentless about survival. So he's not good or bad in his head, but the choices he's making, you're going to judge him. मुझे लगता है this is perhaps arguably the greyest of all. His moral compass doesn't exist when push comes to shove. Ishaqzadeh had one, Villain has one, Aurangzeb had one, Sandeep or Pinky Farrar, there is redemption for a man who didn't know that he has issues, and then there are redeeming qualities that show up unknowingly. I think this character is not looking for redemption or to be told that he's morally done right by anybody. He's just an impulsive survivor, and he'll play anything against anyone and do anything to be in the right side of a situation. He's trying to make anything combustible so he can get out of it. वो किसी को भी भिड़ा देगा निकलने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई भी डिसीजन ले लेगा without caring about collateral damage, and that's actually a pretty chaotic space to be in, where you're only thinking about yourself. That's how the world is supposed to be. Which is what I'm saying. So the thing is, you can relate to the quality so easily in today's world. Society is selfish in a bigger sense. So Gopal actually is the darkest side of a normal man. Nice. You started with Vishal sir in Pataka, correct? Yeah. And now Aasmaan is starting his career featuring और तुम you in a film. वेटरन बन चुकी हो.
टिप्स दिए अब आप वेटरन बनने के टिप्स दीजिएगा जरा थोड़े से। कुछ टिप्स शेयर किए तुमने? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बनूं यार। चिप्स तो शेयर किए होंगे तुमने, टिप्स नहीं तो। But how different are these two coming from? I don't know if I should be calling because I मैं haven't seen जवाब दे, तू ये Kuttey. Same school of cinema तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि of course उनकी approach different and विशाल sir की different. But for you, because you have worked with two directors, how do you feel? Is there a common point of reference? Definitely, the core is the same. Vishal sir has more. He knows my answer because I've asked him 10,000 times. आज ही. सिर्फ आज. So, but honestly, like Vishal ji has this thing, this sense of calm around him because of the experience that he's had. Aasmaan is very driven right now. He has his own voice, which is really ambitious, which is really risky. He doesn't shy away from getting away from the reality. He dreams big. So even if Vishal ji is like, hey, let's get realistic, he's like, no, I'm gonna achieve that thing. I'll show it to you. He might or might not be able to do that, but at least he goes for it with that drive. So to be in this energy is like really, really motivating. It's like, yeah, let's do it. Why are we settling here? But with Vishalji, it's like he brings you into the character zone just by being himself. So you don't need to get in a zone. Even if the chaos is there on a set, you just look at him and you're centered. So it's that aura that he creates. It's that environment that he creates. And he pushes your boundaries. So they both have individual voices, but the core is the same, and that's why it seems so honest and real. Tabu said in an interview that Aasmaan had this thing about him कि मुझे ये shot ऐसा ही चाहिए है तो ऐसा ही चाहिए, and I was like, he's so young, but he's so sure. So what do you have to say about that? I love that interview about the way she spoke about him. What happened is that I was not sure about कि ये सही होगा या ये गलत होगा. ये मुझे था कि मैंने अपने दिमाग में ऐसा देखा है, तो unless someone can give me something better, I want to do this. So this is what we'll do. If someone can suggest something better, a better way to show something, or a better way to perform this, or a better way to capture this, I am of course open. And if I like that more, I will do that. But right now I want this. So when so many times with the DOP, with my DOP Farhad, he has been like, I get what you're saying. Should we do it like this instead? And I've been like, 100% we're doing it this way now. So that has also happened, but it was just that because I've seen this film in my head, I've made it, edited it, and done the BGM post, everything in my head before I started it. So I just knew what I wanted to see. So I went with that much clarity that I know what I want and what I've seen. And then kuch bhi milega, I will adapt to it. There is no, I'm not some ऐसे के नहीं यही करेंगे. I was open that way. That yeah, but this is what I want is what I went with. Arjun, in our not so controversial 10-year special interview, you said it to me. You said it to me about the power of ensemble films, that how we don't encash on what good talent we can put it in a frame and make a proper film. And we were speaking on the behalf of, like, if you have a producer's vision. Here, I mean, Naseer Saab to Tabu to Konkona, you name it, you have it. How do you see ऐसे में power play sets पे कि characters, क्योंकि एक तो एक सबके एक से बढ़कर एक मतलब But like, इसके पहले there was an interview we just did, which is what I spoke about. All of that comes from the material. All of that comes from people who are secure enough to come on a set and know that the material is so strong and the director is solid enough that he will tell you what you're supposed to do, versus you trying to dictate terms and try to influence. अगर आपका director या आपकी writing अगर कमजोर है, तो a person can come and try and influence the scene. If the writing is solid enough and a director is aware that his scene has to go from point A to point B and no more or no less, in an ensemble, actor बहुत समझदार होते हैं, whimsical होते हैं, लेकिन बहुत समझ पहले दिन समझ जाते हैं कि भाई director को जो shot चाहिए वो चाहिए, या वो आप बताइए क्या करना है वाला director हो सकता है.
You know, so that is where the dynamics can change of an ensemble. And credit to Vishal sir has handled so many films in the past that have been ensembles. I think Aasmaan subconsciously knows how to go about making films, handling actors. And more than handling, I think it's about making sure paper पे इतनी solid कर दो कि ensemble करते हो सबको अपना काम पता, सब अपना काम करके vanity van चले जाएंगे. किसी को दखलंदाजी नहीं कि यार मैं चलेगा तो राधिका क्या करेगी, मेरी लाइन तो नहीं खा जाएगी, because वो thought ही नहीं आना चाहिए. There should be no room on paper or on a set for that conversation to exist, because you should know कि राधिका की दुनिया और है, वो character और है, मैं जो जहाँ से आ रहा हूँ. This film anyways is written very well and it's divided. Sometimes when you have an ensemble working together, everybody feels, but that's more in humor, you know, everybody wants to do a lot more. It is the future of cinema, according to me. In Indian cinema, in Hindi film cinema, I think we need to all come together and work more often. A lot of it is to do with the writing, but more importantly, I think we need directors to hold on to the promises that are made off camera. And then when you come on set, they need to be fulfilled. As long as you can do that, I genuinely believe, I love doing ensembles, and like I told you, I've always aspired to do them. But for that, you need strong people behind the scenes making these films. Otherwise, the power play sometimes can take a toll on the film. And it's not right for the film. What happens is, you're satiating my ego, he's satiating her ego. उस सब में पिक्चर कहीं ना कहीं छूट जाती है. और थोड़ी सी चूकती है ना, वो आप जब फाइनली देखते हो, आपको जब तक अंदाजा होता है बहुत देर हो चुकी होती है. राधिका, कुत्ते को मुझे अगर सम करना हो, गन, गूंस एंड गालीज, ऐसे लाइक द 3 Gs. ये राजन डी की ये टाइटल ना ले ले तुमसे कुछ. उनका है ना गन्स और गुलाब, they might change it to this. गन, गूंस एंड गालीज नाउ. बट ऑन अ funnier note, rate them. ये गन, गूंस एंड गालीज में who was ranking where? मतलब मैं मांग नहीं रही हूँ कि फिल्म में कौन कैसा था, बट अगर ऐसे ऑन सेट की लाइटर नोट पे पूछना हो, कौन सबसे सबसे बड़ा गून कौन था? श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ टाइटल में कह नहीं बोल सकती. सबसे बड़ा कुत्ता, सबसे बड़ा बंदूक कौन था? सबसे बड़ा गुंडा कौन था? सबसे ज्यादा गालीबाज कौन था? अर्जुन. कैरेक्टर वाइज, अरे जस्ट इन जनरल ऐसी मैं तो मार दी जाऊंगी अगर मैंने इनमें से किसी का भी नाम ले लिया. यार ये देख, मैं तो मार दी, कैसे ले लूं मैं यार? तब्बू मैम, कोको मैम, नसीर साहब, ये अर्जुन मेरे को ही मार देगा. नहीं मुझे ठीक है. नहीं चलो अर्जुन तुम जवाब दे दो. वैसे मैं अभी उसमें नहीं हूँ. गालीबाज तो इसी को एडवांटेज था. आपने ट्रेलर में देख लिया, इसको तो खुली छूट तब्बू मैम चिल्ला के फिल्म सिटी में चिल्ला जा रही. आज भी वो गूंज अवेलेबल है, आप जाओ ना फिल्म सिटी में तो सडनली आपको लगा राधिका की आवाज ऐसे गूंजती हुई वो रास्ते पे अभी भी पाई जाएगी. उसने इतने खुश होकर चिल्लाया. तो गाली का टाइटल तो कितने लोगों ने कितनी बार गालियां बोली. वो गाली की इंपैक्ट देखो, हर इंटरव्यू में तुमसे पूछते हैं राधिका जब आपने वो मुंडी निकाली बाहर. दिल से. एंड गून बताओ चलो फिर. नसीर साहब. हाँ मतलब नसीर भाई से तो मतलब देखो एक बार आँख मिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाला हिसाब भाई. एक बार देखो पोस्टर में, उसमें भी तो आसमान को भी 2-3 घंटे लगे थे थोड़ा कूल डाउन होने में कि he is the true big boss, big daddy of the film in that sense. और क्या तीसरा क्या था? गन्स है. अभी तो ऐसे अर्जुन के तुम पे जा रहे हो. आई थिंक अर्जुन एंड कोको मैम. सबसे बड़ी गोली मतलब पिक्चर में तो ऑफ कैमरा तो मैं ही हूँ. सब टाइम पास ही करते रहते थे. इधर से उधर से सब जगह फिट हो जाता था जाके. तो करेक्ट. अर्जुन का इधर भी ढिश किया, उधर भी ढिश किया, उधर भी ढिश किया. सब सबसे बना के रखो. गोपाल का कैरेक्टर वही था कि सबसे बना के रखो. ये अखियों से गोली मारे अलग लेवल पे चल रही है. इस पिक्चर में मैंने आंखें ज्यादा नहीं इस्तेमाल की है, मैंने बंदूक इस्तेमाल कर दी. सीधे बंदूक मेरी ले. आई थिंक वी आर गेटिंग ऑल द वन लाइनर्स फॉर कुत्ते दिस टाइम फॉर श्योर. बट लास्टली एज वी फिनिश दिस, सबने पूछा होगा, ऑफ कोर्स मैं भी पूछूंगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस नसीर या तब्बू या कोंकणा के साथ से ज्यादा आप तीनों के लिए? व्हाट वाज द मोस्ट हिलेरियस मेमोरी यू हैड विद देम ऑन द सेट? ऑफ कोर्स यू वर स्कैर्ड. 3 घंटे लग गए नसीर साहब के साथ पहला शॉट लेने में, एज ही जस्ट स्प्रेड आउट. बट सबसे फन मोमेंट क्या रहा था शूट करने का? मैं बताता हूँ एक क्या हुआ था. ये जो ट्रेलर में है टबू मैम का लास्ट जो ट्रेलर में है ना, जो लास्ट शॉट है ना कि हम सब भाग रहे हैं, गन कहाँ है, वो इम्प्रोव और गलती है. वो प्लान नहीं था. वो शॉट में गन उठाना, सबको गन उठा के जाना है, सबको पता है उनकी गन कहाँ पड़ी और अपना उठा के जाना है. और पहले टेक में टबू मैम उठाने जा रही है, गलती से आई थिंक शार्दुल या किसी का, राधिका का ऐसे उसमें हो गया तो वो पीछे खड़ी हो गई. और उनको लगा कि मैं ऑब्वियसली और टेक लूंगा और वो यूज नहीं, ये वाला यूज नहीं करूंगा. उसमें जो उनने जेन्युइन गुस्से में वो बोला है कि मेरी गन कहाँ है, मैं
कट बोल के हंसते हंसते वहां गिर गया और मैंने बोला कि बस लेट्स मूव ऑन। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये कैसे यूज करेंगे। मैंने बोला इसमें तो मेरा सर कटा हुआ मैं दिख नहीं रही। हाँ मैंने टैबू मैम को फिर बोला कि मैम मैं ले लूंगा, हम आप आधा घंटा वेस्ट करने वाले हैं ये रीटेक करने में। मैं हाँ लिया 2 टेक और यूज लिए, पर मैंने यूज वही किया क्योंकि मैंने बोला था कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं तो मतलब साले गधो मेरी गन का बस कि मतलब नहीं, बट जस्ट द वे शी ट्रीटेड अस विद डिस्डेन। ये छोटे बच्चे उठा के ले गए, जो मिला कहाँ है यार, क्या भागदौड़ मचा रखी है तुम लोग ने, बंदूक ठीक से तो उठाया करो। प्लेग्राउंड बना रखा है हाँ वही। And she done that in improv and she thought कि shot कटने वाला था। That actually I remember that was the that was really fun. But this is so cool, right from the poster to this one. I am equally excited because I want to see where you take your world, not your father's world. So guys, stay tuned because Kuttey in cinemas on Friday, and I think उसके बाद से मैं अर्जुन से आराम से एक बारी फिर से कि अर्जुन ये वाला टाइम पे आया कि नहीं आया। But thank you so much. Thank you. Thank you so much.